Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy plus subscription. So Unacademy plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. Then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name. Then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. You can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBSE classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBSE क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get de-notified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, what will we study today in today's lecture? The topic sustainable development. We are going to continue with that. So in last two lectures, we have seen the points like the introduction about sustainable development, what is sustainable development,
Then the next point which we have discussed is need for sustainable development. Then the next point which we have discussed, that is dimensions of sustainable development. इसके बाद हम लोगों ने देखा what are the pillars of sustainable development. Then the next point which we are going to study in today's lecture is sustainable development goals and measures taken for implementing sustainable development goals in India. So let's get started with today's point. That is sustainable development goals. So ये goals कब डिजाइन किए गए हैं? That is in September 2015, the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes 17 Sustainable Development Goals. So 2015 के सितंबर में ये एक प्रिंसिपल बनाया है, that is building on the principle of leaving no one behind. The new agenda emphasizes a holistic approach to achieving the sustainable development for all. So ये एजेंडा जो है वो ईयर ऑफ द 2030 के लिए बनाया गया है, so that we can achieve the sustainable development till the year of 2030. So the 17 sustainable development goals included in Agenda 2030 are like this. So first one is the no poverty. So अभी इसका मीनिंग आई डोंट थिंक सो मच इन डिटेल बताना पड़ेगा मुझे. दैट इज गरीबी कम से कम हो जाए, फिर देयर मस्ट बी नो पॉवर्टी. पूरे देश से गरीबी जो है वो हटा दीजिए. सो ये एक दिन में या फिर एक रात में होने वाला काम नहीं है, 1-2 सालों में होने वाला काम नहीं है. इट इज द लॉन्ग टर्म गोल. सो आई होप वी विल बी एबल टू अचीव दिस. Then the next one is the zero hunger. देखिए अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग यानी कि अंडर द पॉवर्टी लाइन स्पेशली भूखमरी से मरते हैं. दे आर फेसिंग सो मेनी मैल न्यूट्रिशंस ऑल्सो. सो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक वक्त का भी खाना नहीं खा सकते. सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में द मेन गोल इज नो पॉवर्टी and the second one is the zero hunger, कोई भूखा ना रहे. And then third one is the good health and well-being. That is सबकी सेहत अच्छी रहे and everyone should be fit and fine. So good health का importance क्या है आप लोगों को पहले ही पता चला होगा during this pandemic period, so that your immunity power must be more. सो हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को ये ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड पता चला होगा. मेनी ऑफ द पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम द डिसीज. व्हाट वी बीमारी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोरोना वायरस. सो आप लोगों को पता चला गुड हेल्थ इज हाउ मच इम्पोर्टेंट एंड फॉर द वेल बीइंग आल्सो. देन फोर्थ वन इज द क्वालिटी एजुकेशन. देखिए यहाँ पर वर्ड एजुकेशन क्यों नहीं लिखा है, सिर्फ एजुकेशन भी काफी होता था, बट हियर द वर्ड इज रिटन दैट इज क्वालिटी एजुकेशन. सिर्फ एजुकेशन मिलने से काम नहीं चलेगा, आपका एजुकेशन जो है वो क्वालिटी लेवल का होना चाहिए. दैट इज यू मस्ट बी एबल टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एजुकेशन एंड द नॉलेज. एजुकेशन करना मतलब सिर्फ पढ़ाई करो, एग्जाम्स में मार्क लाओ और दैट्स इट, ऐसे नहीं होता है. यू मस्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर एजुकेशन इन योर डे टू डे लाइफ. It is you must have that much knowledge about that. Then next goal है, that is goal number 5 जो है वो है gender equality. So gender equality देखिए that is all men and women must be equal. So काफी कंट्रीज में, that is काफी देशों में gender equality को इम्पोर्टेंस दिया गया है. हमारे इंडिया में भी दिया गया है, बट वी शुड थिंक that is सच भी यहाँ पर gender equality है भी या नहीं. By this survey,
ऐसा देखा गया कि यूएसए में 51% जो इकोनॉमी है, देखिए आई एम टेलिंग नॉट 50%, 51% जो इकोनॉमी है इट इज अंडर द वुमेन, एंड 49% जो इकोनॉमी है इट इज अंडर द मेन। दैट इज वहाँ पर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड फीमेल बिजनेस वुमेन जो है वो ज़्यादातर पर है। बट आप लोग इंडिया का अगर रेशो देखोगे बहुत ही डाउन है। सो यहाँ पर अभी भी जेंडर इक्वालिटी के सिर्फ नाम पर रहती है। कहाँ कुछ जगहों पर कुछ सिटीज ऐसे, कुछ स्टेट्स ऐसे लाइक केरला, दे आर हैविंग सो मेनी जेंडर इक्वालिटी थिंग्स लाइक almost many women, almost all women are getting educated, and yes, their birth ratios are also going to be increased, and they are increasing the birth ratios of the females. सो अगर देखा जाए पूरे इंडिया में जो फीमेल का रेशो है एज कम्पेयर टू मेल इन केस ऑफ द बर्थ, वो भी बहुत ही कम है। स्टिल देयर आर सम मेंटालिटीज इन आवर इंडियन सोसाइटीज दैट वी मस्ट हैव द मेल चाइल्ड, दैट इज बेबी बॉय। सो जेंडर इक्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सो दैट टू बैलेंस द नेचर। Then the next goal is clean water and sanitation. Yes, obviously clean water तो सबको पीने के लिए चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि हम खुद ही अपनी नदियाँ कितनी गंदी कर देते हैं। That is, वही नदी का पानी हमको पीने को लगता है, हम लोग बोलते हैं नदियाँ गंदी हो गई, पर हम खुद वो करते हैं। So we are responsible for that. कोई दूसरा लाके नहीं करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन ह्यूमन बीइंग आल्सो लाइक अस। सो यस, रोड पर गंदगी दिख रही है, अरे कितने गंदे हो गए, नदियाँ पूरी गंदी हो रही है, कितने गंदे हुए, ऐसे बोल के नहीं चलेगा, हमको खुद उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज आल्सो द गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then next one is the affordable and clean energy. Yes, आजकल शहरों में काफी हद तक clean and affordable energy जो है वो अवेलेबल है, but still there are so many rural areas जहाँ पर अभी भी एनर्जी नहीं है। Likewise, बहुत सारे एरियाज इंडिया में जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है। So this is also the goal of the sustainable development, to have the affordable and clean energy. Then goal number 8 is, which is most important, that is decent work and economic growth. जो वर्क करे वो पूरी ईमानदारी से करे एंड उसके साथ साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो करे। सो आप लोगों को पता चला वर्किंग एंड डिसेंट वर्किंग में क्या डिफरेंस है। दैट इज मेनी फ्रॉड पीपल आर देयर। वो क्या करते हैं, बैंक का पैसा लेकर करप्शन करते हैं, या फिर दे गेट bankrupt also. So economic growth के लिए थोड़ा सा decent work तो करना ही पड़ेगा आपको। That's why the country will be having the economic growth and sustainable development also. Then next one, that is goal number 9, is industry, innovation and infrastructures. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉपर इंडस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए। देन न्यू इनोवेशंस मस्ट बी able to maintain the sustainable development goals also, and the infrastructures must be like that will not affect the environment. So this is one of the most important sustainable development goal regarding the economic growth and nature also. Then 10th one is that is goal number 10 is reduced inequalities. Obviously inequality जो है बहुत ही हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी की बात की, दैट इज मेल फीमेल रेशियोज एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी इनइक्वालिटी जो है, देखिए गरीब ज्यादा गरीब होते जाता है और अमीर ज्यादा अमीर होते जाता है। सो ये जो इनइक्वालिटी है, दैट इज द समझ में जो डिफरेंस है अमीर और गरीबी के बीच, वो कम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज reduced inequality. Then next one is sustainable cities and communities.
जी हाँ, ऐसे cities होनी चाहिए that should be sustainable and some communities must be there that should also be sustainable. That's why these sustainable cities and communities are the important part of sustainable development goals. Then next one is the responsible consumption and production. अभी यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में हमको क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कंजप्शन है वो रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, डू नॉट वेस्ट एनर्जी। एंड प्रोडक्शन जो है हम लोग नए मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ों का करते हैं जैसे कि प्लास्टिक होता है विच इज़ हार्मफुल टू वेरी नेचर। सो रिस्पॉन्सिबली हमको उसके बारे में कुछ एक्शंस लेनी चाहिए and we should find the alternative for the plastics also. Many people are using that also, that is using the paper bags or cotton bags like these things. So यहाँ पर हमको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो है प्रॉपरली करना है by having some responsible actions also, and the production of the different things must be by having the responsible actions. Then the next goal is, it is goal number 13 is climate action. जी हाँ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अर्थ इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे, लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर लेवल्स दैट इज सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो क्लाइमेट एक्शन के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सारी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीजें जो हो रही है नेचर में चेंज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्री प्लांटेशन करें, और ना सिर्फ ट्री प्लांटेशन करके हमारा काम वहीं पर नहीं रुकता है, वी हैव टू मेंटेन दैट ट्रीज, देन वी हैव टू कीप द नेचर सेफ। लाइकवाइज अगर आपके पास बहुत सारा वेस्टेज है देन यू कैन कन्वर्ट दी वेस्टेज एंड गार्बेज इनटू बायो वेस्टेज, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइकवाइज बायोगैस प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी कैन यूज द गार्बेज एज दी फर्टिलाइजर्स फॉर द सॉइल विच इज वेरी नेचुरल फर्टिलाइजर। सो ऐसे सारे छोटे छोटे क्लाइमेट्स के रिगार्डिंग एक्शंस हम लोग लेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन हैव द वन स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अभी हम लोग देखिए ज़्यादातर आजकल सोलर एनर्जी के प्लांट्स जो है वो फेमस हो रहे हैं। सो उससे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं, देन वी कैन हैव द सोलर वाटर हीटर, देन सोलर गैस आल्सो। सो ये सारी चीजें तो देखिए इंटरडिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो टू अवॉइड दिस, दैट इज टू अवॉइड दिस changes in climates, we must have some actions related to the climate. Then goal number 14 is life below water. Obviously इंडस्ट्री वेस्टेज होते हैं वो ज़्यादातर नदियों में बह जाते हैं, देन उससे क्या होता है, मछलियाँ जो होती है, द लाइफ विच इज अंडर द वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड सो मच। सो पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे मछलियाँ हैं, दैट इज सम फिशेस आर देयर, सम एनिमल्स आर देयर, दे आर गेटिंग वैनिश्ड। लाइकवाइज जैसे कि अभी हम लोग भी देखिए किसी अगर एक कोई नदी में से जा रहा है, सपोज दे आर हैविंग फ्रॉम द वुड्स, दे आर थ्रोइंग द गार्बेज, दे आर थ्रोइंग द प्लास्टिक्स इनटू द sea, and that plastics is going to directly into the fish and animals who are there in the water. So इससे क्या होता है, वो जो है obviously that is going to affect on their health also, and they are getting less in population in by day. So sustainable development में ये life below water का जो गोल है वो बहुत ही important है to maintain the life there. Then next one is the life on land. So life on land में हम भी आते हैं, and the animals, creatures of the water वो हमने जैसे देखे वैसे ही animals on the land जो कुछ भी है वो सारे आते हैं। So इससे क्या हो रहा है, देखिए पोल्यूशन से आप लोग गार्बेज कूड़ा कहीं पर फेंक देते हो, जनरली वो गाय या फिर डॉग वो खाते हैं, then that plastic is going into their stomach and it is going to affect their health. So ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, and we are eating the space of jungles by forests by having their cutting the forest trees and having the maintaining the streets by maintaining the what we can say by maintaining the building, वहाँ पर building बनाकर by building the
मॉल्स, बाय बिल्डिंग द होटल्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन जितना करते जा रहे हैं उतना ही हम लोग उनकी जगह जो है वो लेते जा रहे हैं. सो मेनी फॉरेस्ट आर गेटिंग वैनिश्ड. So the next sustainability development goal is life on land, which should be maintained properly. Then goal number 16 is that is peace and justice and strong institutions. देखिए सबको शांति चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, and for that there should be strong institutions. So this is nothing but the next important goal for the sustainable development goals. And lastly, goal number 17, which is the last goal of sustainable development, is partnership to achieve the goal. जी हाँ, so ये सारे goals अचीव करना किसी एक नेशन का या फिर एक कंट्री का काम नहीं है. We have to work together regarding this sustainable development goals. That's why it is necessary to maintain the sustainable development goals in the partnership. So these are nothing but the 17 goals which we have seen regarding the sustainable development. So goal number 1 is no poverty. The goal number 2 is zero hunger. Then next which we have seen, the goal number 3 is good health and well-being. Goal number 4 is quality education. Goal number 5 is gender equality. Goal number 6 is clean water and sanitation. Goal number 7 is affordable and clean energy. Goal number 8 is decent work and economic growth. Goal number 9 is industry, innovation and infrastructures. Then goal number 10 is reduced inequality. Then goal number 11 is sustainable cities and communities. Then goal number 12 is responsible consumption and production. Then goal number 13 is climate action. Goal number 14 is life below water. Then goal number 15 is life on land. Goal number 16 is peace and justice and strong institutions. And lastly, goal number 17 is partnerships to achieve the goal. So next point which we are going to study is the 5 P's of sustainable development. So the sustainable development 5 P's are here. देखिए ये 5 P's है, these are focused in the particular needs of the poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, that is sustainable development. So ये 5 P's कहाँ से, that is the source of this 5 P is UN Sustainable Development Goals, that is SDGs, which were published in 2015. So ये 5 P's जो है वहाँ से हम लोगों ने लिए हैं. So first P of the sustainable development is prosperity. Okay, so we are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in harmony with nature. तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक चीज़ों का ध्यान रखना है, that we all ये human beings जो है वो सारे they can enjoy their lives and they can enjoy their economic and technological and social progress also by having the nature with them. So this is the first P of the sustainable development. Then next P, that is partnership. Yes, obviously जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अभी, partnership for to achieve the goals. So we are determined to mobilize the means which are required to implement this agenda through a revitalized global partnership for sustainable development. So based on the spirit of strengthened global solidarity with the participation of all the countries, all stakeholders and all people. The sustainable development is not the responsibility of one human being, but it is the responsibility of all.
That's why it is necessary that we human beings must get together to maintain the sustainable development. Then the next P of sustainable development is peace. Yes. So we are determined to foster the peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence. Yes, there can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. So they are interdependent on each other. So we need peaceful life. There should not be violence and fear. You know the situation portal today the Afghanistan is facing. That is, violence is not good, not a solution for all the issues. So sustainable development तभी maintain रहेगी if you are able to live peacefully. That is no peace, no sustainable development, no sustainable development, no peace. Like though they are interdependent on each other. Then next one is the planet. So we are determined to protect the planet from degradation, then including through the sustainable consumption and production, then sustainability managing its natural resources and taking urgent action on climate change so that it can support the needs of the present and future generation. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोगों को क्या करना है नेचर का बहुत ही ध्यान रखना है दैट इज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पी ऑफ द प्लैनेट जो यहाँ पर जो कुछ भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको हमको कंट्रोल में लाना है सो इट इज नॉट द वन डे और वन नाइट सो वी हाउ टू वर्क फॉर द years and years for this same and we need the people for that. That is the fifth P of the sustainable development. So we are determined to end the poverty and hunger and in all their forms and dimensions, and to ensure that all human beings can fulfill their potential in dignity and equality and in a healthy environment. So without people, sustainable development is not possible. That's why these 5 P's of sustainable development are listed by the UN. What are these 5 P's we have seen right now? That is prosperity, partnership, peace, planet and people. So now we'll move towards the last point of this chapter, that is measures taken for implementing sustainable development goals in India. So many of the government flagship programs such as Swachh Bharat, then Make in India, Skill India, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं Digital India are the core of the sustainable development goals. So to implement the sustainable development goals in India, the measures are taken like that. First one is the government of India's premier think tank, the Niti Aayog, has given the responsibility of supervising and coordinating the actions, schemes and so on for the sustainable development goals. So नीति आयोग को जो क्या दिया गया है, they have given the responsibility of supervising and coordination of the actions and schemes that are needed for the sustainable development goals. Then next one is the states have been directed to implement and ensure the action, implementation and monitoring of centrally sponsored schemes for implementing sustainable development goals. So states जो है उनको डायरेक्शन दिया गया है to implement and ensure the actions and actual implement and monitor the centrally sponsored schemes for implementing sustainable development goals. Then next one is the Ministry of Statistics and Program Implementation, which is also known as MOSPI, has been made responsible for developing national indicators for the sustainable development goals. Then the state governments has been directed to erect the required body for the visioning, planning, budgeting, developing and then implementation and monitoring the system erected for the
Sustainable Development Goals. Okay, these are some of the measures we are taken for implementing the Sustainable Development Goals. So ये आने वाले lectures में हम लोग देखेंगे what are the challenges in Sustainable Development Goals specifically for India. And then we are going to discuss after all the measures or how to overcome the challenges which are there in Sustainable Development Goals. So students, the book which I referred for today's lecture is Information Technology by Sumita Parekar. And in this total chapter what we have studied, देखिए हम लोगों ने क्या देखा, introduction about the sustainable development, what is mean by the sustainable development. Then next one is the what is the need for sustainable development. Then we have seen the dimensions of sustainable development. The next point which we have seen, that is pillars of sustainable development. कौन कौन से pillars है, जैसे कि social है, economic है, ecological है, and lastly these are all bound by the agent which is known as the political or governance. Then we have seen totally 17 sustainable development goals. And lastly, the next point we have seen the 5 P's of sustainable development goals. Likewise, prosperity was there, then people is there. उसके बाद हम लोगों ने देखा partnership is there, peace is there, and planet is there. And then next point which we have seen, the measures taken for implementing sustainable development goals in India. So for that, Niti Aayog has been built in India. The skills such as Swachh Bharat, Make in India, then Skill India, and Digital India. So let me tell you about Unacademy's freedom to learn offer. देखिए ये ऑफर कैसी है, दैट इज दिस ऑफर इज स्पेसिफिक फॉर द इंडिपेंडेंस डे. ये जो ऑफर है आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए है. एंड दिस ऑफर इज वैलिड, that is this independence day you can get freedom to learn offer. And this new offer is only for CBSE Class 9 students. So it is new exclusive offer for all CBSE learners. That is, if you take up a CBSE Class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT JEE, NEET Foundation and NTSA subscription absolutely free. Yes, and you can save up to 40% on subscription price. So what is this IIT JEE, NEET Foundation and NTSA category all about? So you can build the foundation for IIT JEE right from class 9 and the structured courses to help you crack multiple Olympiads like NTSC, IMO, and you can win great national level scholarship also. So this is limited time offer. It is valid for the first 500 learners and the offer can be availed using Educator referral code. So you can use my Educator referral code, that is TD Live. So offer is valid from the 11th of August 2021 to 31st of August 2021. So get your free subscription now by having the 2 years class 9 subscription. So now we are going to start with today's quiz section. So quiz जो रहेगा वो रहेगा वहाँ पर questions रहेंगे and each questions will be having the 1 minute. So let's get started with today's quiz part. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्विज सेशन जो है हम लोग शुरू करेंगे. देखिए क्विज में देयर विल बी टोटली 50 क्वेश्चंस you will be having and each question will be having 1 minute. So let's get started with today's quiz. So here is question number 1 on your screen. How many sustainable development goals are there? Your options are A 48, B 169, C 15 and D 17. Your time starts now.
time up. So correct answer is D17. There are total 17 sustainable development goals. So we will move towards the next question. The next question is, next question number 2 is, how many sustainable development goals target are there? So your time starts now. सो देखिए, हम लोगों ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स कितने हैं, पर उसके टारगेट्स जो है दे आर 169. ऑप्शन बी 169. That is total 169 sustainable development goals target are there. The question number 3 is, when was the sustainable development goal was built? So your option are A 2015, 2016, 2017 and 2018. So your time starts now. So the Sustainable Development Goals was built on A 2015. So the next question is here on your screen. For which year Sustainable Development Target Agenda is proposed? So the answers are A 2025, 2022, 2030 and D 2050. So your time starts now. So for the year of 2030, the Sustainable Development Target Agenda is proposed. Question number 5.
Which of the following is not a pillar for sustainable development? A. Economy, B. Social, C. Environment, and D. None of the above. Your time starts now. Time up. देखिए, the option is D. None of the above, because economy, social and environment ये सारे जो है these are the pillars of the sustainable development. And question is asked which of the following is not a pillar. So the correct option is D. None of the above. So question number 6 is, who is responsible for developing national indicators for the SDGs, that is Sustainable Development Goals? Your options are A. Niti Aayog, B. Ministry of Statistics and Program Implementation, C. Both A and B, and D. None of these. So your time starts now. So correct answer is B. Ministry of Statistics and Program Implementation is responsible for developing national indicators for the SDGs. So question number 7 is here on your screen. Who is responsible for supervising the action schemes for the Sustainable Development Goals? Options are A. Niti Aayog, B. Minister of Statistical and Program Implementation, both A and B, and D. None of the above. So your time starts now. The correct answer is A. Niti Aayog is responsible for supervising the actions and schemes for the SDGs. The question number 8 is here on your screen. Which of the following are qualities of an entrepreneur? So options are A. Strong work ethics, passionate, then creative, that is creative and open-minded, and lastly all of the above. So your time starts now.
So, all of the above mentioned qualities are of an entrepreneur. That is strong work ethic, passionate, creative, and open minded. So, the question number 9 is here on your screen. Entrepreneur means quick wealth. It is an easy way to get rich, whether it is true or false. So, your time starts now. It is absolutely false. Entrepreneurship means does not mean that it is quick wealth and it is an easy option or way to get rich. So correct answer is false. So the next question number 10 is which of the following is not a startup option for an entrepreneur? Options are A, equity financing, B, debt financing, C, government grant, and D, none of the above. So your time starts now. So the options, the correct option is D, none of the above, because equity financing, debt financing, and government grant are the startup options for entrepreneurs. So the question is which of the following is not? So none of the above. Yes, are actually option C. Then the next question number 11 is here on your screen. Entrepreneur contributes towards minimizing socio-economic problems. True or false? Your time starts now. Yes, it is true that entrepreneur contributes towards minimizing socio-economic problems. So we will move towards the question number 12. Which of the following are Government of India's startup initiatives? Options are A, Startup India, B, Make in India, C, both A and B, and D, none of the above. So your time starts now.
So the correct option is both A and B. That is, Startup India and Making India are government's startup initiative. So correct option is both A and B. Then the question number 13 is here. Successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurships. Options are A true, B false. So your time starts now. So the correct answer is A true. जी हाँ बिल्कुल ये सही है. That is, successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurships. Question number 14 is, entrepreneurship degrades the standards of living. True or false? Your time starts now. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉल्स. जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिव को बढ़ाता है ना कि उसको डिग्रेड करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉल्स. So question number 15 is here on your screen. Which of the following is not developed by entrepreneurships? Your options are A society, B economy, C nation, and D none of the above. So your time starts now. So time up. देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप से सोसाइटी जो है वो भी डेवलप होती है, इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप होती है, नेशन जो होता है वो भी डेवलप होता है. बट हियर द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप. सो करेक्ट आंसर इज डी none of the above, because all of these things are getting developed by entrepreneurship. So friends, that's all for today's session. We will meet in the next session with the new topic. Till then, bye.
So the next feature for the Plus and Iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for Plus and Iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's start. Now let me tell you about the offer for Plus and Iconic subscription from Unacademy. The key offer it is going to end on 23rd of August 2021, that is on Monday. Because this is exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12th. So offer देखिए कैसे रहेंगे. If you are having the subscription CBSE subscription, then plus subscription and Iconic, that is for 12, 15 and 18 months, then you can get free CBSE subscription for 2 months. If you are having this subscription for 24, 36 and 48 months for Plus or Iconic, then you can have the free CBSE subscription for 4 months. And if you are having the subscription of the Iconic or Plus, that is for 60, 72 and 84 months, then you can get the totally 6 months. Yes, obviously 6 months free CBSE subscription. So likewise, if you are having the Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, you can get the free Creative Corner subscription for 2 months. And same in the case for the 24, 36 and 41, 44 months, 48 months का आपको अगर subscription रहेगा Plus और Iconic का, then you can get the 4 month subscription for Creative Corner, that is totally free. And the next one, that if you are having 60, 72 and 84 months Plus an Iconic subscription, then you can get the free Creative Corner subscription for 6 months. So you will be having the flat 10% discount on purchasing Plus subscription on for all the duration, and it is valid for the first 500 subscriptions only. So choice is here. With an Unacademy subscription, you can get the many benefits like unlimited access to 7 subjects and India's top educators to choose from. Obviously, you can get the full syllabus, that is NCERT dedicated plus courses. So subscribe now before it's too late, students. The next exams are just for the 2 months, and you can get the 10% discount using Educator referral code. So you can use my code, that is TD Live, for 10% discount on Plus subscription for all the durations. So we are having the mega launch on every Monday. So likewise for class 9, you are having the term 1 victory batch, which includes math, science, English, Sanskrit and SST, that is social sciences. So इसकी start date जो है, it is going to start on the 16th of August 2021. So वैसे class 9 के लिए term 1 victory batches जो है maths, science, English, Sanskrit and SST, these are going to start on the 16th of August 2021. So we are having the mega launch every Monday. हर Monday को ये जो हमारा होता है mega launch होता है. And obviously for class 10th, CBSE class 10th, you are going to have term 1 victory batch for math, science, English, Hindi and SSC. And its starting date is 16th of August 2021. Now for CBSE class 10th, we are having term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social sciences, and it is also going to start with the date, that is 16th of August 2022. So these are nothing but the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. So we are having the topmost educators from India. So jaldi कीजिए, you can use my code, that is TD Live, for flat 10% discount. So friends, let me tell you about the basic about the Plus subscription.
एंड ऑल्सो द एडवांस प्लान ऑफ द बेसिक, दैट इज आइकॉनिक जो है ये प्लस का जो है एडवांस्ड वर्जन रहेगा. देखिए प्लस में जो यू आर गोइंग टू हैव द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड. And yes, obviously at Iconic, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए प्लस के फीचर्स क्या क्या है. यू आर हैविंग द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स एज वेल एज द इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स आल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज स्टडी लाइव फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solution. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो बेसिक क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा with 4,000 per month. Then next one is 6 months, 17,000 रहेगा with 2,833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 and 48 months का रहेगा 83,000, that is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 10,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000, 12 months का 28,000, 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे ही क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live for flat
10% ऑफ डिस्काउंट. सो स्टूडेंट जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर चॉइस दैट इज प्लस और आइकॉनिक प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. चलिए फिर से एक बार अनअकैडमी का कमबैक जो है वो आ रहा है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज अनअकैडमी कमबैक. So you can win scholarships worth rupees and 1 crore and it is on every Sunday. So जो उसकी जो अनअकैडमी कमबैक जो लिंक है it is already given in the description box. So ये कैसे रहेगी? देखिए अनअकैडमी की हमारी जो है वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होगी एंड यस ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनरोलिंग फॉर द फ्री बाय यूजिंग योर एंड्रॉइड फोन ऑल्सो. अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है आप लोग वो भी यूज कर सकते हो. यू कैन व्यू द वीडियो सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चंस ऑल्सो. यू कैन विन द स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस. देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो एक बेनिफिट रहेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू कैन अपील फॉर द लाइव टेस्ट एंड दैट विल बी टोटली फ्री. सो इससे क्या होती है आपकी वीकली प्रैक्टिस भी हो जाती है, सिलेबस भी आपका जो है वो कवर हो जाता है. यस ऑब्वियसली इफ यू विन यू आर गोइंग टू हैव द स्कॉलरशिप. ठीक है, इससे भी पहले हमारे बहुत सारे कॉम्बैक जो हुए हैं. सो यू कैन पार्टिसिपेट फॉर फ्री. सो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा. दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट. इट इज फॉर द CBSE क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो आने वाला जो कॉम्बैक है दैट इज ऑन द 22nd of August 2021 at 11 AM. सुबह 11 बजे जो है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा. यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore. सो इसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चंस. 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव 45 minutes to solve these 30 questions. And yes, obviously tests will be there in both English as well as in Hindi language. So you can choose as per your own choice. And the exam, that is the scholarship test, will be free live, which will be available on Android mobiles. So students, jaldi kijiye, enroll now. The link is given in the description box below. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code that is TD Live for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code that is TD Live. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.